एंड जॉनसन, जिसका इंस्ट्रूमेंट से 35 से 40 लाख रुपीज है, और इम्प्लांट्स जो है नेल और स्क्रू जिसको बोलते हैं, इसको इम्प्लांट्स बोलते हैं, उसका दाम जो है, उसका मूल्य जो है वो 35 से 40 हजार है। अतः पेशेंट पर ही सारा खर्चा का बोझ जाता है। तो अगर आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इस ऑपरेशन को कराते हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख का बिल बनता है, जबकि डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापैटलर नेलिंग ऑफ टिबिया से के द्वारा नेलिंग करने पर, सुप्रापैटलर नेलिंग करने पर 35 से 40 हजार रुपया में आराम से हो जाता है। पैकेज प्रोग्राम में 10 दिन का टोटल खर्चा और नेल का, इम्प्लांट्स का, स्क्रू का सारा खर्चा 35 से 40 लाख लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 1/3 खर्चा में डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापैटलर नेलिंग ऑफ टिबिया पारंपरिक विधि के तुलना में हो जाता है। तो ये है एडवांटेज इसका। जो थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा जो रेडिएशन है, जो क्योंकि थ्रू आउट द सी आर्म से ही प्रॉक्सिमल और डिस्टल लॉकिंग किया जाता है, तो थोड़ा रेडिएशन सर्जन को ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव एप्रन आता है, एप्रन को यूज कर सकते हैं और रेडिएशन को कम किया जा सकता है। अतः यह मेरा डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापैटलर नेलिंग ऑफ टिबिया जो है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और गरीबों के लिए वरदान है। प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत योजना, उसके लिए भी वरदान है। यहाँ गरीब देश जो है, छोटे जो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देश है, जहाँ स्वास्थ्य का जो एलोकेशन ऑफ फंड जो है स्वास्थ्य पर जो बहुत कम होता है, और उसके लिए भी यह वरदान साबित हो सकता है। और यह बैकअप प्लान के तहत भी इंफ्रापैटलर नेलिंग में भी यूज किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटली अगर जिग भुला गए आप इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करते समय, या स्टाफ भुला गया, तो आप इसको फ्री हैंड टेक्निक से डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापैटलर नेलिंग के इंस्ट्रूमेंट से आप इंफ्रापैटलर नेलिंग भी कर सकते हैं एज ए बैकअप प्लान। सो यह बहुत ही उपयोगी टेक्निक है। और RCT नेल इंट्रोड्यूसर कंपोजिशनर जो है वो 40-50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। मैंने इसको 100 केस करीब किया है और सब में रिजल्ट कंपरेबल है पारंपरिक विधि से, और कॉम्प्लिकेशन भी कंपरेबल है। सो धन्यवाद। आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं लाइव हूँ, आप कुछ प्रश्न। So hi friends, today I am going to give a demo of percutaneous fixation of the medial malleolar fracture in a 60-year-old patient who had osteoporotic bone. So along with the fracture of the medial malleolar, he had also a fracture calcaneum. So we decided to fix it with the help of the 2.5 millimeter K wire
after percutaneous reduction of the fracture by joint sticking. And you can see that how I am fixing this fracture with the help of the KY by joint sticking. The same KY is introduced inside the medullary canal for fixation of the medial malleolus fracture. I am confirming the fracture fixation whether it has gone in proper position or not by rotating the foot. So this is the AP view, and you can see that will reduce fracture, and the K wire is going well inside the intramedullary canal. So this is the oblique view. You can see, and this is also oblique view. The KY is going well after fixation of the medial malleolus percutaneously. So, friends, this why I choose this KY 2.5 millimeter. Why I choose this KY 2.5 millimeter KY? Because the patient was old and osteoporotic and fragment was small, so there were chances of shattering of the distal fragment, that is the medial malleolus fragment. This is the lateral view, as you can see, well reduced fracture and well placed KY inside the intramedullary canal. And this is the clinical picture. You can see that how beautifully there is no incision given for the introduction of the KY and percutaneous reduction of the fracture. And this is the oblique view, as you can see in this picture, and this is the so far as the side effect of this percutaneous fixation is concerned, is delayed union due to interposition of the periosteum inside the fracture fragment and slightly more fluoroscopic time, because all steps are done with the help of the CR. So the radiation exposure is more than open reduction and internal fixation of the fracture. So these are the two computations, and the advantage of percutaneous fixation is that the less chance of infection, and the indications are the skin condition is bad, an osteoporotic patient and diabetic patient where there is chances of infection is more. A percutaneous fixation can be done. This is a well buried KY, 2.5 millimeter KY, and I am doing this, I am hammering this last end of the KY to bury this KY, last end of the KY is within the soft tissue. And this is the final stage of the surgery, that I am putting this finally after thorough wash of the wound. This skin incident given in the last step because the burying of the last end of the KY was not possible without putting this incision. So this incision was given at last step, and finally the skin incision is given, and
the last end was buried within the soft tissue, and this STS is over, and surgery is over. So this is the well done surgery for this patient. So thank you very much for patient hearing. And these are the check X-ray. Thank you for watching this video. पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से मटेरियल का उपयोग हुआ ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स में। पहले स्टेनलेस स्टील का उपयोग हुआ, फिर टाइटेनियम का उपयोग हुआ नेल्स और प्लेट बनाने में, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉर्टिकल बोन का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडिफाइड टाइटेनियम which is made porous and modified to simulate the modulus of elasticity of the cortical bone को बनाया गया और इसको उपयोग में किया जा रहा है। उसके बाद कार्बन फाइबर्स का पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लेटिंग और नेटिंग में क्या अंतर है। पहले प्लेट जो है वो वेट बियरिंग इम्प्लांट है और नेल्स जो है वेट शेयरिंग इम्प्लांट है। वो जब हम लोग वेट बियर करते हैं, वेट बियरिंग बोन पर बोन के फ्रैक्चर के बाद नेलिंग और प्लेटिंग के बाद, तो पूरा वेट जो है वो प्लेट ले लेता है और नेल जो है वो शेयर करता है बोन से और नेल से जो पूरा वेट जो लेते हैं वो शेयर करता है बोन से, और प्लेट जो है वो पूरा वेट बॉडी का ले लेता है। अतः उससे फ्रैक्चर का नेल का ढीला होने का और एक्सेंट्रिक फोर्स लगता है प्लेटिंग में, प्लेट में, वेयर एज फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द वेट बियरिंग बोन इज सेंट्रल इन केस ऑफ nailing. So the nail is a better implant than plate. So these are the differences in plating and nailing of the fracture of long bone of weight bearing bone of the human body. So plate is weight bearing, whereas nail is weight sharing. In the cases of plating, the force is eccentric, whereas in nails the force is central while we bear weight on weight bearing bone. So the callus form is primary callus in case of plating, whereas in case of nailing, the callus is secondary callus, which is supposed to be very, very strong callus. And after removal of the implant, there is no chance of refracture. Whereas after removal of the plate, there is chance of refracture at the fracture site. Moreover, there is a stress shielding in cases of plating, whereas in cases of nailing, there is no stress shielding. So under surface of the प्लेट होता है वहाँ हड्डी कमजोर हो जाता है धीरे धीरे, और इम्प्लांट रिमूवल करने के बाद वीकनेस के कारण रिफ्रैक्चर होने का चांस रहता है। अतः प्लेट रिमूवल के बाद कुछ दिन लिम्फ को रेस्ट में रखना पड़ता है, और जो कि नेल में निकालने के बाद लिम्फ को रेस्ट में नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि कैलस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और सेकेंडरी कैलस रहता है और उसे रेस्ट का जरूरत नहीं रहता, और उससे वेट बियर पेशेंट कर सकता है फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी। सो these are the differences, and the most important, in case of plating, there is soft tissue stretching, so जितना आप सॉफ्ट टिश्यू को इंसर्ट करिएगा वो आपको इंसल्ट करता है in the form of infection. So the infection rate in plating is more than about 2 to 8%.
so far as my knowledge is concerned, and in the best condition of the OT, whereas in nailing it is about 1%, because the close nailing is done, no soft tissue stitching, no disturbance in the periosteal blood supply, no disturbance in the endosteal blood supply. So these are the differences in slitting and nailing. So we have also discussed about the material used in orthopedic implants, like stainless steel, titanium, and titanium elastic nails, and carbon fibers. About the material used in the carbon fibers is supposed to be just to recapitulate the best implant, because the modulus of elasticity of this carbon fiber is about same as the modulus of elasticity of cortical bone of the human body. So it is, and there are 4C. We can just to remember the advantages of the carbon fibers so far as the orthopedic implants of carbon fibers are concerned. It is costly, it is not cost effective, and it is lightweighted, because इसी से जहाज का बॉडी बनता है, तो इट इज लाइट वेटेड। और जिस तरह से जहाज जो है हवाई जहाज वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे -40 डिग्री और 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उसी तरह से ये नेल भी, कार्बन फाइबर्स का जो नेल होता है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हर कंडीशन में उसको वेट बियरिंग को बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। सो इट इज लाइट वेटेड एंड not cost effective. It is very costly affairs in comparison to titanium and stainless steel. So number 3 is no cold welding. कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है कि जब हम इम्प्लांट निकालते हैं तो इम्प्लांट रिमूवल के समय कभी कभी स्क्रू जाम हो जाता है, तो प्लेट में जाम हो जाता है प्रोलॉन्ग प्रेशर के कारण, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो वो जामिंग को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग करते हैं। तो कोल्ड वेल्डिंग जो है वो कार्बन फाइबर्स इम्प्लांट्स में नहीं होता है। तो concluding, the third C, it is not cost effective. There is no cold welding in cases of carbon fiber implants. And third C is the concluding. जैसे हम लोग स्टील के इम्प्लांट को या टाइटेनियम के इम्प्लांट प्लेट को हम लोग ऑपरेशन के समय मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। The fourth C, the 1C is the cost. It is very costly. The second C is the cold welding, and third C is the contouring. The contouring is not possible at the time of surgery in OT, and वो क्या डायलर है, फिल्मी डायलर की उस पर टूट सकता है लेकिन छुप नहीं सकता है। उसी तरह यह कार्बन फाइबर्स जो है, कार्बन फाइबर इम्प्लांट्स जो है वो टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको कस्टम मेड इम्प्लांट्स बनाना पड़ता है, कंपनी से ही उसको कंट्रोल करके सप्लाई किया जाता है। और फोर्थ सी इज कोरोजन रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इसमें कोरोजन नहीं होता है, लाइक लीचिंग और पिटिंग ऑफ इम्प्लांट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टील इम्प्लांट्स, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम इम्प्लांट्स में हो सकता है, जो कि कार्बन फाइबर्स में नहीं होता है। और इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैंसर पेशेंट, द फोर्थ सी, वन फोर सी, it is very useful in cancer patient
because it is radiolucent and not radiopaque. तो हम लोग चारों तरफ बोन के फ्रैक्चर के चारों तरफ जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है वो कैलस बन रहा है कि नहीं उसको एक्सेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज इट इज रेडियोलुसेंट एंड कैंसर बोन ट्यूमर का रिग्रेशन हो रहा है कि नहीं थेरेपी देने के बाद सीटी स्कैन और एमआरआई और एक्सरे करके हम लोग देख सकते हैं, रेडियोलॉजिकली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि बोन ट्यूमर का रिग्रेशन हो रहा है कि नहीं. सो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. नंबर 2, इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड मैनुअली इन द ओपी. एंड थर्ड सी इज corrosion resistant, and fourth C, it is very useful in cancer patient. And other advantages are there is no stress shielding in case of steel implants as well as the titanium plate. There is a stress shielding, and in case of carbon fibers plate, there is no stress shielding. The weakening of the bone under the plate is not there in cases of carbon fibers plate. So these are the advantages and disadvantages of कार्बन फाइबर प्लेट. एंड आजकल मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा इम्प्लांट लगाइए, ऐसा प्लेट लगाइए, ऐसा नेल लगाइए जो अंदर गल जाए. तो ये पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल है. मैग्नीशियम एक मेटल है जो यूज होता है बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट बनाने में, और सिंथेटिक पॉलीमर लाइक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA एंड PAA पॉलीएसिटिक एसिड यूज होता है बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट बनाने में. लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोर्टिकल बोन का करीब 10 से 12 होता है, जबकि ये सिंथेटिक पॉलीमर का 2 से 5 होता है. अतः बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अतः वेट बियरिंग बोन में जैसे टीबिया एंड फीमर के फ्रैक्चर में इसको नहीं यूज कर सकते हैं. ये जल्दी टूटने का डर रहता है, कमजोर रहता है, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करीब 4 कम रहता है cortical bone के modulus of elasticity. So the use of this synthetic polymer for the orthopedic, so far as the orthopedic implants are concerned, is limited to the non-weight bearing bone like facial bones and pediatric fractures. दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि कभी-कभी फ्रैक्चर जुड़ने से पहले, फ्रैक्चर का हीलिंग होने से पहले ही वो गल जाता है, शरीर में गल जाता है, और तब फिर दूसरा इम्प्लांट डालना पड़ सकता है. तो अभी तक कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि ऐसा इम्प्लांट, ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर डेवलप किया जाए कि बोन हीलिंग के बाद ही उसका बायोडिग्रेडेशन हो. ऐसा. Hi friends, today I will discuss more about the orthopedic implants. Just to recapitulate the whole thing that in 1939 and 40 the K-nail का आविष्कार हुआ, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग हुआ. और उसके बाद 1950 में रस ब्रदर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने आविष्कार किया और इसको बोथ बोन फोरआर्म फ्रैक्चर में उपयोग किया गया. उसके बाद इंटरलॉकिंग का जमाना आया और इंट्रापैटलर रूट से इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जिसे गुलॉस एंड केम्प ने पॉपुलराइज किया 1970 में. और उसके बाद इंट्रापैटलर रूट के बाद जो बीच में प्लेटिंग का दौर आया, जिसमें शुरुआत में
हेवी ड्यूटी प्लेट का यूज किया गया, फिर डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट को यूज किया गया, फिर लो कॉन्टैक्ट डीसीपी एलसीडीसीपी का यूज किया गया। उसके बाद एडवांस इंटरलॉकिंग करने जमाना आया। पहले इंटरलॉकिंग नेलिंग केवल डायफिशियल फ्रैक्चर में यूज होता था, फीमर का हो चाहे टीबिया का हो चाहे ह्यूमरस का हो, लेकिन बाद में मेटाफिशियल फ्रैक्चर के लिए भी एडवांस इंटरलॉकिंग शुरू हुआ, जैसे कि लोअर एंड ऑफ द फीमर and upper end of the upper third of the femur, subtrochanteric fracture and supracondylar fracture के लिए DFN, supracondylar fracture के लिए DFN और subtrochanteric fracture और trochanteric fracture के लिए PFN यूज होने लगा। फिर PFN A आया ऑस्टियोपोरोटिक बोन के लिए, PFN A2 आया, इसको यूज होने लगा। आजकल ऑस्टियोपोरोटिक बोन का ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में PFN A2 ही यूज करते हैं। और मेटलर्जी के बारे में शुरू में स्टील का उपयोग हुआ, जो ये तो बहुत स्टीफर होता है, about 10 times stiffer than the cortical bone of the human body. So ये लोड बियरिंग हो जाता है और लोड शेयर नहीं करता है ह्यूमन बॉडी से। तो कैलस जो बनता है उसमें वीक बनता है। इसके बाद टाइटेनियम नेल्स, जो नेल्स बनते हैं वो टाइटेनियम एलॉयज के बनते हैं और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कॉर्टिकल बोन के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इस तरह से उसको एलॉय बनाया जाता है, इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। सो इट इज मोर बायो फ्रेंडली एंड बायो कंफर्टेबल। उसके बाद आया तो कार्बन फाइबर्स का, तो कार्बन फाइबर्स का बिकॉज इट इज ट्रांसलूसेंट, इट इज नॉट रेडियो ओपेक, so it is very useful in cancer patient, pathological fracture due to bone tumor। उसमें क्या प्रोग्रेस है ट्यूमर का, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे रिग्रेशन हो रहा है कि नहीं, चारों तरफ ट्यूमर के हम लोग देख सकते हैं। और फ्रैक्चर का कैलस बन रहा है कि नहीं ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो ट्रांसमिशन होता है, रेडियो ओपेक नहीं होता है और कोल्ड वेल्डिंग नहीं होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये स्क्रू को निकालना जो है आसान है और काफी जो बहुत हाई स्ट्रेंथ होता है इसका, जो काफी ड्यूरेबल होता है और फ्रैक्चर हीलिंग तक ये टूटता नहीं है, इसमें कोरोजन नहीं होता है और कार्बन फाइबर्स में कोरोजन नहीं होता है और कैंसर पेशेंट में यूजफुल है और स्ट्रेस सेविंग नहीं होता है जो कि मेटल में होता है और वीक कैलस बनता है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कैलस बनता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बेंड नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के समय हम लोग प्लेट को बेंड करते हैं ताकि बोन का शेप ले ले, वो मैनुअली बेंड करते हैं, तो उसको आप बेंड नहीं कर सकते हैं, ये टूट जाता है लेकिन बेंड नहीं होता है। सो थैंक यू। आज मैं आपको इंट्रामेडुलरी नेलिंग ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के इतिहास के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैक्सिको में 16वीं शताब्दी में रेसिनस वुड यानी कि लकड़ी का उपयोग इंट्रामेडुलरी कैनाल में डालने के लिए होता था ताकि हड्डी का जुटान हो जाए, लेकिन उसे असफल होना ही था, कीटाणु संक्रमण के कारण वो असफल हो गया। उसके बाद आइवरी हाथी दांत का उपयोग होता था, क्योंकि उसका रंग उस आदमी के हड्डी से मिलता जुलता था, तो
तो ऐसा विश्वास था लोगों का कि 18वीं शताब्दी में ऐसा विश्वास था कि बायो फ्रेंडली और बायो कंफर्टेबल होगा, तो हड्डी के आदमी के हड्डी के साथ घुल मिल जाएगा। 1939 to 1940 में असली क्रांति इंट्रामेडुलरी नेडिंग के क्षेत्र में हुआ। जब कुंसर ने, जर्मनी का सर्जन था, उसने सबसे पहले कुंसर नेल बनाया, जिसे के नेल भी कहते हैं। ये के नेल है, देखिए ये निकालने के लिए ऊपर में एक छेद है और इसमें निकालने वाला औजार को फंसा करके निकालते हैं और डालने के लिए इसको अपर एंड ऑफ द फीमर से डालते हैं। 1939 to 40 में इस नेल का उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी उपयोग किया जाता था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में थॉमस नेल और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, जिससे बहुत दिन तक मरीज को, सैनिकों को बेड रिडन रहना पड़ता था और बेड शोर और निमोनिया, किडनी फेल्योर और पल्मोनरी मरीजों का चांस रहता था। और इस नेल के आने से सेकेंड वर्ल्ड वार में जो सैनिक विभिन्न देशों से जर्मनी गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने के लिए, वे अपने अपने देश लौटे तो उनके देश में देखा गया कि इस नेल का उपयोग कुंसर ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और जल्दी से जल्दी मरीज उसमें खड़ा हो जाता था और चलने फिरने लगता था, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता था और हड्डी भी जल्दी टूटती थी। लेकिन यह लॉ नहीं था। तो 1950 में ही कुंसर ने ही ये आइडिया दिया था कि अगर ऊपर नीचे इसको लॉक कर दिया जाए तो रोटेशन नहीं होगा। ये रोटेशन हो रहा है, ये घूम रहा है अगल बगल और ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा, तो ज्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन होगा। तो 1950 में आइडिया कुंसर ने ही दिया था और इस नेल को के नेल को भी सेपरेट होता है और क्लोवर लीफ सेपरेट होता है। उसके बाद बीच में 1950 में रिमिंग का कंसेप्ट आया, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया जो इंट्रामेडुलरी कैनाल का है और नेल से ज्यादा कॉन्टैक्ट हो और मोटा नेल डाला जा सके, ताकि ज्यादा रिजिड और स्टेबल फिक्सेशन हो सके और जल्दी से जल्दी मरीज को हम लोग चला सके। तो ये कॉन्सेप्ट था 1950 में। और 1970 में ग्रॉस एंड केम्फ ने सॉलिड नेल को इंटरलॉकिंग नेल का इंट्रापेटलर रूप से करने का कंसेप्ट दिया, जिसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लॉक कर दिया जाता है। और हालांकि ये कंसेप्ट 1950 में कुंसर ने ही दिया था, जिसे डिटेंशन बोर्ड टूल ने कहा, और बाद में 1970 में ग्रॉस एंड केम्फ ने इसको स्पेशल जिग बनाया, जिसके थ्रू अपर फ्रैगमेंट और लोअर फ्रैगमेंट में दो बोल्ट स्टैटिक और लॉकिंग, स्टैटिक और डायनेमिक लॉकिंग का कंसेप्ट भी ग्रॉस एंड केम्फ ने दिया। और मॉडर्न युग जो है बहुत दिन तक 1990 तक ये इंट्रापेटलर रूप से को डाला जाता था टिबिया फ्रैक्चर में। तो उसके बाद फीमर फ्रैक्चर में भी इसको डाला जाता था। ये फीमर नेल है और
ऊपर छेद है और 2 नीचे छेद है। इसको भी जिग के थ्रू लॉक किया जाता था। बाद में देखा गया कि नीचे के छेद लॉक करने में परेशानी आती थी, इसलिए फ्री हैंड टेक्निक से आजकल डिजिटल लॉकिंग किया जाता है। सो ये फीमर नेल है और ये टिबिया नेल है जो आजकल इंट्रापेटलर रूट से यूज किया जाता है। इसे सुप्रापेटलर रूट में भी यूज कर सकते हैं। सो अपर फोर्थ ऑफ द टिबिया फ्रैक्चर में इंट्रापेटलर रूट से करने से 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ द नी करना पड़ता है। तो इसलिए 90 डिग्री फ्लेक्शन करने से प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का एंटीरियर एंगुलर डिफॉर्मिटी बढ़ जाता है ड्यू टू पुल ऑफ द पैटेला। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, पुल ऑफ पैटेला को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुप्रापेटलर नेलिंग का कंसेप्ट आया, जिससे 1996 में टोर्नेटा एंड कोलिंस ने ये कंसेप्ट किया। सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द नी में, नी के द्वारा अगर नेलिंग किया जाए सुप्रापेटलर नेल रूट से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री फ्लेक्शन करने के कारण इंट्रापेटलर रूट नेलिंग रूट के द्वारा नेलिंग करने में उसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो पैटलर पुल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है सेमी एक्सटेंडेड पोजीशन में रखने से। तो फर्स्ट टाइम टोर्नेटा 2 एंड कोलिंस ने ये कंसेप्ट दिया। बाद में 2012 में एओ ग्रुप ने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिल करके सुप्रापेटलर नेलिंग का जो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट सेट बनाया, जिग और प्रोटेक्टिव स्लीव, जो कि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, और उसी के थ्रू रिमिंग, गाइड वायर और नेल को डाला जाता है ताकि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। तो डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाया एओ ग्रुप ने, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन, स्मिथ एंड नेफ्यू ने बनाया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह होता था कि ये काफी महंगा था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी और 35 से 40 लाख का इंस्ट्रूमेंट सेट आता था और 35 से 40 हजार का इम्प्लांट का खर्च पड़ता था। तो गरीब मरीजों के लिए छोटे छोटे नर्सिंग होम में इसे यूज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ही क्लियर कर सकते थे। इवन सरकारी हॉस्पिटल में भी, छोटे छोटे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक ऑपरेशन के लिए उतना सरकार भी खर्च वहन नहीं कर सकती है, उतना महंगा इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद डॉक्टर आरसी ठाकुर ने, डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक को इनोवेट किया, जिसमें फ्री हैंड टेक्निक से अपर एंड लोअर लॉकिंग किया जाता है और जिग का उपयोग नहीं किया जाता है। और PFN A2 सेट से ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव को यूज किया जाता था, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट का लंबाई चौड़ाई, जो ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव यूज किया जाता है, तो उसका लंबाई चौड़ाई और उसका डायमीटर जो होल होता है उसको डालने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो सेम ही था। तो उसको PFN A2 सेट का ड्रॉपर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव यूज किया और एक कलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर, टिबियल इंट्रापेटलर रूट का टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर है, जिसे कलर कोडिंग कर दिया गया। इसके 4 फेस है, अपर एंड में 4 फेस है, जिसमें ABCD लिखा गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप अपने स्टाफ का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। या इसमें हमने ABCD लिखा। अगर ए जो है, अगर नेल को कसने के बाद तो
नेल को कसने के बाद इसमें कलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर को कसने के बाद अगर एज कंसाइड करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, तो थ्रू आउट द नेलिंग प्रोसेस एक कंसाइड करेगा इंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल से, और सी और डी कंसाइड करेगा लैटरल एंड रेडियल सरफेस से, और डी जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन बना रहता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट सेट का कॉस्ट 0 हो जाता है और नेल वही रहता है जो यह बहुत कम खर्च में हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट सेट का कॉस्ट 0 और 2000 से 5000 तक जो इंस्ट्रूमेंट नेल स्क्रू का खर्च पड़ता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और बाद में कुछ परेशानी आया नेल को डालने के प्रॉपर पोजीशन में, तो RCT ने प्रोड्यूसर कंपोजिशनर को बनाया गया, जिसमें नेल को डायरेक्ट कस किया जाता है और इसमें लॉक हो जाता है, और लॉक करने के बाद जो है इसको नेल को डालते हैं। अपर लेवल ऑफ द कलर कोडिंग किया जाता है, और इसमें एक बीच में इंस्ट्रूमेंट के बीच में RCT ने प्रोड्यूसर कंपोजिशनर में सेंटर में एक होल होता है, जिसमें टॉमी बार लगा करके नेल को पोजीशन में रखते हैं। जब हम हैमर करते हैं तो धीरे धीरे नेल रोटेट करता है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इसको डिरोटेट करके प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं और उसके बाद नेल को अंदर डाल देते हैं। till last end of the nail seated in proper position, this can be derotated in proper position. So ये है इतिहास नेलिंग का, के नेल से लेकर सुप्रा पैटर्न नेलिंग तक। So thank you very much for patient hearing of history। बहुत ही रोचक हिस्ट्री है इंटरलॉकिंग नेलिंग का। So के नेल टू डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रा पैटर्न नेलिंग ऑफ टिबिया, ये इतिहास है नेलिंग का। धन्यवाद। The supine position of the patient with a bump in the interscapular space, in which position I do interlocking nailing of humerus. With the traction only, with the assistant, both sides, the traction is given, and external rotation of the proximal fragment is done with the hand only. As you can see in this picture, evident in the fluoroscopy picture, you can see, and I am externally rotating the proximal fragment to see the lateral view of the fracture. So after reduction of the fracture in both AP and lateral view and confirmed on the fluoroscopy picture, we make we introduce a 2.5 millimeter or 3 millimeter K-wire or steamer pin percutaneously at the selected entry point, both in AP and lateral view. The entry point is usually in AP view, it is at the point at the junction of the articular and non-articular fracture. And in lateral view, it is in the line with the intramedullary canal. So if the fracture is in the upper part, upper fourth of the humerus, the entry point is in a AP view, it is in intra-articular surface of the
humeral head, because it should be central in both AP and lateral view. So I am introducing 2.5 millimeter external pin percutaneously at the selected entry point. You can see this is the AP view. I am selecting the entry point. It is intraarticular portion of the, you can see in this picture, because the fracture is the upper fourth of the humeral shaft, and this is the lateral view. I am seeing it in the lateral view. It is inside in the line of the intramedullary canal, and it is inside the intramedullary canal in both AP and lateral view, confirmed in the fluoroscopy picture. And I am exchanging this treatment pin with a kind wire. A 2 millimeter kind wire is exchanged for this treatment pin, 2.5 millimeter treatment pin, and after making a stand hole, after making a small range in the rotator cuff, and this is my right wire is inside the proximal fragment in the proper position inside the intramedullary canal in both the AP and lateral view, and you can see the fraction is reduced. And take your time while introducing the fracture side, while crossing the fracture side and introducing the line wire in the distal fragment. It should be reduced, the fracture should be reduced in both AP and lateral view. And now I am inside the distal fragment. Don't put the guide wire inside the soft tissue and don't do trial. Then this is the reading of the intramedullary canal. Serial reading is done. First of all, with the 6 millimeter reamer, and it is being read, and then the 7 millimeter reamer is used up to the lower end of the humerus. It is about up to the 2 to 2.5 centimeter, proximal to the 8 millimeter is reamer is being used in this picture, as you can see in active view, and it is crossing the fracture site. You take the proper time, and the fracture should be reduced while doing reaming, and it should not be in varus and valgus position, and it is inside the distal fragment. As you can see in this picture, the 8 millimeter reamer is inside the distal fragment, is introduced. So after reaming, we introduce a 7 millimeter nail of appropriate size with hand movement only. Don't use electric reamer or hammer. Only the last few centimeters of the nail is introduced by hammering. So it is a well-placed nail up to about 2 to 2.5 centimeters above the alveolar fossa. And now I am deciding where I should put my incision for distal locking. And this is the K-wire position on the skin, put on the skin horizontally, another K-wire vertically over the overlapping the nail and crossing the hole. So where the both K-wire cross each other, the bisecting point in the middle of the proximal hole, dynamic hole, will be my point of incision in the skin. So after putting about 1 to 1.5 centimeter length skin incision, we do dissection, soft tissue dissection with the fingers or the artificial forces, and then 1.5
1.5 millimeter K wire, sharp K wire is used to make a hole. After making both holes circular, the lower hole circular and relaxing the upper hole, dynamic hole in the blade as much as possible. And this is the 1.5 millimeter K wire is being put. You see, this is put in angle because the shape of the anterior surface of the distal humerus is triangular, so it should be put in angle. So introducing in near cortex, we do drilling of the distal cortex through this hole, and after drilling, we have put both the screw. You can see in AP and lateral view well sized screw and well placed screw inside the hole in both AP and lateral view. So I am putting the proximal screw down. You can see that the nail has been buried about 5 millimeters from the articular surface inside the intramedullary canal. The first screw has been put with the help of a jig and drill sleeve and the sleeve. Both the screws have been put. The well sized screw you can see, and I am confirming it in oblique view as a lateral view, even along with the jig. You can see that the jig is in place, and still I am confirming it whether it has gone inside the hole properly or not, and well placed to both the screw inside the both hole, well sized screw in active view and well placed screw in the lateral view also. So this is the last step. And first of all, I do distal locking because the back hammering of the nail is done when required to reduce the distraction at the fracture site, to eliminate the distraction at the fracture site, and the fracture is compressed. But in this case, there is no distraction at the fracture site, and nail has been buried inside the intramedullary canal about 5 millimeters from the articular surface of the head. So this is the lateral view and AP view of fluoroscopy picture. You can see this is the lateral view, well placed distal screw, well sized distal screw, and this is the AP view, and you can see the final position. There are two skin incisions, one for the entry of the nail and other for the proximal to the screw. So these are the last confirming fluoroscopy picture. You can see the well placed both screw and well buried nail around 5 millimeters from the articular surface. This is the fracture. You can see there is a communicated fracture. There is no distraction. Okay, thank you. छपरा के डॉक्टर आरसी ठाकुर ने हड्डी फ्रैक्चर के इलाज में क्रांतिकारी तकनीक विकसित कर देश भर में पहचान बनाई है। उनकी तकनीक से 35 लाख रुपए तक का महंगा इलाज मात्र 35,000 में संभव हो सका है। ऑर्थो सर्जरी में योगदान के लिए गुवाहाटी में आयोजित इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि छपरा, सारण और बिहार के लिए गर्व की बात है। इनोवेशन अवार्ड इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि गुवाहाटी IOACON 25 में दिया गया है, और यह अवार्ड पूरा भारतवर्ष में 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिला है, जिसमें बिहार से मेरा नाम है। अतः से छपरा जिला में जिला का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या बिहार का डायरेक्ट चलता है। और ठीक है, भोजन लगा दो।
ऑर्थोपेडिक सर्जन या बिहार का कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसमें मेरा नाम आया है। 100 आदमी सूरत है। ये है मिस्टर प्रशांत कुमार जो असम से आए हैं। उनके दाहिने कूल्हे का एक्सरे पिक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिफॉर्म्ड हो गया है और एक दूसरे में चिपक गया है। कूल्हे का हड्डी कूल्हे का गोला कप में चिपक गया है और काफ़ी हड्डी बन गया है उनके। इसके कारण काफ़ी रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट में उनको हो रहा था। वे ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे कुर्सी पर। ये है एक्सरे पिक्चर जिन्हें टोटल कूल्हा उनका बदल दिया गया है ऑर्थो सर्जिकल केयर सेंटर में। और 10 दिन के बाद वो वॉकर पे चल रहे हैं और फिर सीढ़ियों से उतर रहे हैं। इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि उतरते समय पहले प्रेशर वाले पैर कूल्हा को बदला गया है, उसको पैर रखना, उस पैर को रखना है। उसके बाद अच्छे पैर को रखना है और चढ़ते समय पहले अच्छे पैर को ऊपर रखना है। उसके बाद जिसमें कूल्हा को बदला गया है उसको रखना है। ये अब ऑपरेशन के बाद ये कुर्सी पर बैठ सकते हैं, इवन लो चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल और पेनलेस मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट आप देख सकते हैं किस तरह से खुद खड़े हो जा रहे हैं और लो चेयर पर भी आराम से बैठ जा रहे हैं। ये बिना सहारा के 10वें दिन बिना दर्द के चल पा रहे हैं। The number one myth is interlocking nailing of humerus will severely impair the shoulder function due to rotator cuff damage. The reality is, with proper technique and entry point, the rotator cuff damage can be minimized and shoulder function can be preserved. So the myth number 2 is there is always chance of radial nerve injury as it is a complication for the interlocking nailing of humerus. And it is not a complication for the open reduction and internal fixation for plating. So it is, yes, it is there is risk of radial nerve injury when the fracture is at the spinal groove. There is chance of the radial nerve injury, but in the rest of the part, if the fracture is in the rest of the part of the humerus, there is minimum chance of the radial nerve injury when the instruments like the guide wire, remote, and the nail is introduced after proper reduction of the fracture in the distal fragment. Both AP and lateral view, the fracture is reduced properly. Only then these instruments are introduced inside the distal fragment. And don't allow your instrument to wander inside the soft tissue. So these are the two myths which is
associated with interlocking nailing of humerus, and other two controversies whether which position of the patient should be used for the interlocking nailing of humerus. There are three positions. Number one, supine position. When it is used, it is comfortable for the anesthesia point of view as well as the surgeons. But the distal locking, which is done by freehand technique, is slightly difficult and tricky because the anterior surface of the distal part of the humerus is triangular. So finding the entry point for the distal locking is slightly difficult because slipping of the drill bit or KY. So it should be at angle, it should be introduced at angle, and then it should be kept in a straight line. So this is the disadvantage of supine position, and in lateral position as well as the prone position, the distal locking is done from the posterior surface, which is flat. So the entry hole, finding the entry point for the distal locking is easy because the surface is the flat, but it is uncomfortable position for anesthesia point of view, and the surgeons, it depends on the surgeon's choice. So I do use supine position for all my interlocking nailing. Number three controversy is because it is non-weight bearing bone, so one screw distal and one screw proximal is sufficient. But I use 2 screw distal and 2 screw proximal because the 2 is always better than 1, always stronger than 1. If it is just like the 2 kidney present in human body, if one fails, other start working. So, and 2 engines in the aeroplane, one engine fails, the other start working automatically. So, if one screw is not working, then the other screw will do its work. So, the fixation is better by 2 screw proximal and 2 screw distal. So, friends, these are the advantages of interlocking nailing over the plating of the humerus, and these are the myths, and these are the controversies whether 2 screws should be put proximal as well as the distal, what position should be used in this talk, and let us get tuned for the next video and subscribe my channel for more update on orthopedic surgery and insight. Hello friends, I am Dr. RC Thakur, orthopedic surgeon, Chhapra, Bihar. Today I am going to present my innovative work named Dr. Thakur Innovative Technique of Suprapatellar Nailing of Tibia. Tibial fractures are most common among the long bone fractures in human body. These are usually caused by high energy trauma like fall from height. Study shows Dr. Thakur innovative technique of suprapatellar nailing of tibia is safe, cost-effective method of treatment for metaphyseal tibial fractures. Intramedullary nailing technique is the treatment of choice for diaphyseal fracture of tibia in adults. In treatment of metaphyseal tibial fractures, concerns regarding difficulties with reduction due to anterior deformity becomes a challenge. Suprapatellar nailing becoming popular choice for treating metaphyseal fractures.
It is highly specialized surgery and requires very highly specialized instruments, sets and implants that tends to be very costly. Dr. Thakur's innovative technique of suprapatellar nailing of tibia delivers 100% satisfactory union of fracture in safe and cost-effective way. No special instrument or jig are required. A protective sleeve and a dropper can be used from PFN A to Z, and color-coded infrapatellar tibial nail extractor can be used to introduce the nail in proper position. Between March 2020 to March 2021, Dr. Thakur's innovative technique of suprapatellar nailing of tibia conducted on 25 patients to fix their tibial fractures. The patients having tibial fractures with no involvement of articular surface were included in this study. Age of the patient ranged between 18 to 60 years and they had no comorbidities. All surgery were performed after an average of 5.5 days, the range being 3 to 12 days after accident. 2.5 millimeter K wire used as a blocking wire to improve nailing of proximal tibial fractures. The tibial fractures of all the patients was fixed by Dr. Thakur's innovative technique of suprapatellar nailing of tibia. This is the flow diagram how Dr. Thakur's innovative technique of suprapatellar nailing of tibia done. It is done in semi-extended position, about 20 degrees of flexion at the knee joint, either transverse or longitudinal skin incision were given, but longitudinal split of quadriceps tendon done. Knee joint injured from above, proper and protective sleeve from PFN A to Z inserted. Entry point is just medial to the lateral tibial spine. The guide wire, first malleable guide wire, were introduced after severe bleeding, fracture reduction and confirmed by fluoroscopy, mounting of the nail with appropriate size over the color-coded tibial nail extractor done. Introduction of appropriate nail size over the guide wire done in proper position with the help of color-coded tibial nail extractor. Locking both proximal and distal done by freehand technique. No jig were used. Wash and repair of quadriceps tendon done and closure done. These are the pictures how we did our cases by Dr. Thakur's innovative technique. These are the instruments, the color-coded tibial nail extractor, protective sleeve from PFN A to Z, proper and malleable guide wire, and stout and hard guide wire. Reamer, these are the passage of sleeve, proper and hard guide wire in the retropatellar space in AP and lateral view. Passage of reamer over the guide wire after percutaneous reduction with the reduction forceps in AP view, and this is in lateral view. Nail entry over the guide wire and nail entry in distal fragment in AP view. Nail entry in distal fragment in lateral view, and then both locking screw
introduced in proximal fragment. In epi and lateral view, all the 3 screws introduced in distal fragment by freehand technique. This is the clinical picture. Proximal locking done by freehand technique. Post-operative follow-up steps. First post-operative day, passive flexion and extension of the knee and ankle joint done. Third post-operative day, active flexion and extension at the knee joint and ankle joint done. 10th post-operative day, patient started walking with the help of walker, non-weight bearing. 6 to 8 weeks post-op, we started partial weight bearing. 12 weeks after operation, we started full weight bearing. Now, the final observation, operative time was in this study 80 plus minus 10 minutes. Range was 65 to 110 minutes. Average fluoroscopy during surgery was 38.5 plus minus 6.5 seconds. The range being 10 to 50 seconds. The average time of union fracture was 8 weeks after surgery, with fracture healing time was 12 weeks. Average hospital stay was 10 to 12 days. All patients followed up after 2, 3, 6 and 12 weeks. Those who could not return for follow-up, telephonic follow-ups were done and called for follow-up in hospital. No complication were observed. No patient experienced any loosening or breakage of a screw or nail. No one complaint of knee pain. No reduction loss or significant displacement of fracture occurred after surgery. At final follow-up, 21 cases found excellent and 4 good results. In none of the patient, removal of nail was done for any cause. These are the results. Fracture, lower third tibia, APL lateral view, post-op, X-ray of lower third tibia, APL lateral view. Fractures, lower third tibia, again second case, APL lateral view, post-op, X-ray picture, APL lateral view. This is third case of fracture of upper third tibial fractures, APL lateral view, post-op, and this is the clinical pictures, 3 weeks follow-up. Okay. Fourth case, pre-op X-ray, upper metaphyseal fracture of tibia, and this is the post-op X-ray of upper third fracture of metaphyseal tibia. This is fifth case, the lower third, very low fracture of tibia, and this is the post-op APL lateral view. This is the clinical picture 3 weeks after the surgery. Duration of this surgery, the number of cases included in this study was small. The study was not comparative with the standard technique. The status of cartilage over the patella and trochlea post-surgery has not been evaluated. Thus, furthermore study with larger population and long follow-up time is required to compare this innovative technique with a standard technique of suprapatellar nailing. In this technique, fluoroscopy time was slightly more than the standard technique because both distal and proximal locking were done by freehand
technique. Finally, friends, this innovative technique is very, very cost effective. In fact, no cost is incurred for this suprapatellar technique. Whereas the standard instrument sets are very, very costly, this technique can be adopted in smaller and medium class orthopedic hospital. If the only disadvantage of this technique is the slightly more radiation occurs because the locking both proximal and distal are done with freehand technique. But this can be lessened by gaining more and more experience in freehand technique for locking proximal and distal tibia. Thank you. Hello friends, I am Dr. RCT Ortho, orthopedic surgeon, Chhapra, Bihar. Today I will give a demo of PFN A2 surgery for an osteoporotic patient for intertrochanteric fracture of the femur. The design of the spiral blade provides a stable fixation of this fracture and you can make mobile our patient. So today let us come to the surgery. This is the X-ray of 72 years male having osteoporosis with a fracture of the intertrochanteric unstable type. And this is the post-operative X-ray of the same patient. And now I am going to start my surgery. The skin incision. Before the skin incision, I will draw a line from anterior superior iliac spine down to the table, and another line from the tip of the greater trochanter towards this first line, and the point of bisection of these two lines is the point of incision for this surgery. So I am making an incision at these bisecting points where the two lines bisect. So I am giving incision about 2 centimeters, as you can see in the picture. So I am feeling the correct point of entry. It should be at the junction of the anterior 2/3 and posterior 1/3 in lateral view, and in epi view it is just medial to the greater trochanter in the piriform fossa. So I am feeling with my fingers the correct entry point. So after feeling this, I am confirming, I am introducing a bone owl at the correct point selected, and then I am confirming this whether this bone owl is entering at correct selected point or not in CR picture. So I am introducing the owl in correct position after confirming the entry point in CR picture, both in epi and lateral view. So
this is the AP view. It is entering in proper selected position, and this is inside the intramedullary canal in correct position, going medially in AP view, and this is hammered if it is in place inside the intramedullary canal in proper position, confirming in both AP and lateral view. And then I will pull this bone out for 2 centimeters to introduce the guide wire. The depression or groove present in the lateral side will guide this guide wire inside the hole, and the guide wire is entering inside the intramedullary canal along the depression or groove present laterally in the owl. So it is inside the intramedullary canal, well placed in AP view. And now I will remove the owl. So I have removed the owl, and I'm doing reading of the medullary canal. In the osteoporotic patient, the reading is not required. This is for the measuring the size of the intramedullary canal, diameter of the intramedullary canal, to select the correct size of the PFN A2 nail. So, but this is for measuring the intramedullary canal, and I am reaming by number 10 and then number 11 ream, and the size is 11 millimeter diameter, PFN A2 nail selected, and then I am reaming with a 15 millimeter reamer because the upper part of the nail is about 15 millimeter diameter. So I am reaming this, and my assistant is pushing the reamer sleeve medially so that it goes in correct position. So it has been reamed with 15 millimeter reamer, and now I am introducing the nail of selected size, and I will hammer the reamer with the help of supine drive. I am hammering the nail inside the intramedullary canal so that the hole present in the nail comes in the central position of the neck of the femur in AP view, and the spiral blade can be introduced in central position in AP view, and now I am giving an incision for introduction of the spiral blade, and this is the buttress nut. My assistant is tightening it, and so that
it touches the lateral wall of the femur. And then I will introduce a guide wire sleeve, and a hard and a stout guide wire is being hammered in the central position of the neck of the femur. And I'm confirming it whether it has gone in central position in both AP and lateral view. You can see in the picture, it is in very good place. It is central in AP view and central in lateral view also. So I am doing rimming. Some surgeons do rimming up to the lateral cortex only, but I do rimming up to the size of the nail selected. So I have rimmed up to the proper distance, and now I am hammering the spiral blade after confirming it central position in both view. And I am compressing this spiral blade by clockwise movement, and so I am compressing the spiral blade by clockwise movement and removing the screwdriver by anti-clockwise movement. So the spiral blade is introduced in proper position, both anterior and lateral view, and then my assistant is attaching the arm for distal locking on the jig. And after measuring the screw size, I am introducing the drill sleeve for drilling the cortex for distal locking. And this is the 2.5 millimeter guide wire. I am introducing, just perforating making a dimple on the lateral cortex. I am hammering this hard and stout guide wire in the lateral cortex. And after confirming it, in CR picture, I am drilling with the power drill, both lateral and the first cortex is drilled, and now second cortex is also drilled. And now I will put a selected size of a screw for distal locking. I am measuring this on the CR. I am measuring the size of and now I am tightening the screw, distal screw. The final tightening is done.
confirming in see our picture. The final tightening is being done now. It has been tightened. And now my surgery is over, and this is the happy view. You can see that it is in good position, and this is the lateral view of distal screw. It has been introduced in proper position in the hole, and this is the lateral view. The spiral blade has gone in the central position in lateral view also. So I will give a forceful wash of the wound, and finally I will stitch the skin and close the wound in layers. And I am closing the wound. The wound has been closed. Without any drain. And I will mobilize this patient on second post-operative day. This surgery is well indicated for the osteoporotic patient with an unstable type of intertrochanteric fracture, because the very design of the spiral blade provides stable fixation, and we can mobilize the patient from and we can mobilize the patient from second post-operative day. So this is the lateral view, and this is the AP view post-operative. So thank you everybody, my anesthetist, my assistant, my supporting staff. I think this is the well-executed team for a old osteoporotic patient, for unstable type of intertrochanteric fracture. We can make this patient mobile from second post-operative day, which is usually required. Although this was not a very displaced fracture, but to make the patient mobile, we planned this surgery for this patient. Thank you everybody. Hello friends, today I am going to give a demo of interlocking nailing in fractured shaft femur lower third in a 72 years old female. This patient sustained this injury due to fall on the ground. Usually this fracture occurs due to high velocity trauma in young adults.
either due to road traffic accident or fall from height. But in old age, this may happen in a trivial trauma due to fall on the ground. So let us come to the demo of this surgery. This is the X-ray of the same patient having lower third short oblique type of fracture of the shaft femur. As you can see, in the other limb, the patient has been operated, that is interlocking nailing has been done 4 years back for the fracture of the shaft femur. So this time the patient had come to me for the lower third fracture of the shaft femur or other limb. So let us come to the surgery. First of all, I will make an incision just above the greater trochanter, about 2 to 2.5 centimeter diameter, and then after blunt dissection of the tissues, I am introducing by a screen movement of the CR, and you can see that this is the every view of the fracture with the help of the F tools, my position, and I am confirming on the CR whether the fracture is operative throughout the nailing process, reaming process and nailing process. The fracture is kept in reduced position with the help of my assistant. I will remove the guide wire before proximal locking, and now I am doing proximal locking after K-wire, and the distant cortex is drilled with 3.2 millimeter in both anti and lateral view. And now I will do, because the effect of anesthesia was wearing off, so which was accepted, and you can see that